Bismillahirrahmanirrahim. We'll begin with the name of Allah, the most gracious, the most merciful, with prayer to Allah to increase our knowledge. Assalamu alaikum to all of you. I hope every one of you will be fine. Your Ramzan will be going very good. And I welcome you all to the first lecture of your new endocrinology unit. And finally, this will be the last unit of your pharmacology course. And then your pharmacology will be completed, inshallah ta'ala. And so moving on with the to the case scenario. Well, we have a 3-year-old boy weighing 13 kg, presents with a short stature. Past history and growth chart reveals normal birth weight and birth length, but a progressive fall off in height velocity relative to age matched normal ranges, starting at 6 months of age. Physical examination demonstrates short stature and mild generalized obesity. Genital examination shows descended but small testes and microcephalus. Microcephalus means that is small penis. So, what do you think? And this could be the to your provisional diagnosis. Anything in your mind? Uh, Something related to growth hormone. Hmm? So, lab reports revealed also growth hormone deficiency and delayed bone age of 18 months. Yes, this is a case of a growth hormone deficiency. So, the patient was put on replacement with recombinant human growth hormone by his physician at a dose of 40 microgram kilogram per day subcutaneously. After 1 year of treatment, his height velocity has increased from 5 centimeter per year to 11 centimeter per year. So now the question arises in our minds that how does growth hormone stimulate growth in children? And after going through this lecture, you will come to know the answer of that how growth hormones stimulate the growth in children. And what do you think? What are the other hormonal deficiencies suggested by patients' physical examinations? Do you have any idea? Yes, it could be the growth gonadotrophin releasing hormone deficiency because there was a hypogonadism as there were small testes and microphallus, and along with that there could be other hormonal deficiency should be dug out too. So hormonal supplementation for this patient mainly will be growth hormone and other growth hormone releasing hormone supplements can be need to be required in this patient. So moving to our topic of lecture, that is the hypothalamic and pituitary hormones. So the learning outcome at the end of this lecture, every student should be able to appraise the different pharmacological treatments for hypo or hyperfunctional endocrine states. And regarding learning objectives, you should be able to enlist the hypothalamic and pituitary hormones, should be able to discuss the mechanism of action of different hormones, and should be able to appraise the pharmacological effects of growth hormone in detail. And then you should be able to identify pharmacological effects of gonadotrophins and prolactin. And then you need to summarize the therapeutic uses and adverse effects of dopamine agonist and determine the pharmacological effects of posterior pituitary hormones. So these are the learning objectives of our today's lecture, and we will go through it one by one. We will achieve it at the end, inshallah ta'ala. So first of all, we will recall the normal physiology of the endocrine system. That is, the endocrine system and nervous system are the two main control integration systems of the body, as you already know. And these two systems are linked together through the hypothalamus. It links the endocrine system as well as your nervous system of the body. And hypothalamus, what it does, it basically controls the secretions of many glands in the body. Okay. So moving forward, the control of metabolism, growth, and reproduction is basically mediated by a combination of neural and endocrine systems, which is located in the hypothalamus and the pituitary gland. And the pituitary gland basically consists of two lobes, that is the anterior lobe, which is known as adenohypophysis, and the posterior lobe, which is known as neurohypophysis. So moving forward, this is the picture basically showing. And this is the hypothalamus, this is the anterior pituitary, this is the posterior pituitary, and this anterior pituitary. They're basically releasing the hormones to the different organs of the body and are going to act on it. So basically, first releasing hormones are released from the hypothalamus, and then it goes to anterior pituitary hormone, and from the anterior pituitary hormones, the hormones are released, and then they're going to act on the target tissue. So
Coming to the hypothalamic hormones, if we enlist the hypothalamic hormones, it will be the growth hormone releasing hormone. Basically, all hypothalamic hormones are the releasing hormones. They are released from the hypothalamus and they're going to act on the anti-pituitary hormones. And from the anti-pituitary, the hormones are going to release and they're going to act on the target organ. So the first one we have is the growth hormone releasing hormone. And then we have growth hormone releasing inhibiting hormone, which is also known as somatostatin. And then we have thyrotropin releasing hormone, and which is going to release the TSH from the anti-pituitary. Then we have the corticotrophin releasing hormone, right? And then we have gonadotrophin releasing hormone, and then we have prolactin inhibiting hormone, which is also known as dopamine. You can name it also dopamine, right? So this is also the picture showing this gonadotrophin releasing hormone released from the hypothalamus, and it's going to act on the anterior pituitary. In the anterior pituitary, it's going to cause release of the LH and FSH, which are going to control the reproductive system of the body. And then we have growth hormone releasing hormone, which are going to release from the hypothalamus, going to act on the anterior pituitary. From the anterior pituitary, growth hormone is released, which is going to act on the body for the growth and metabolism. Similarly, growth hormone inhibiting hormone, which is also known as somatostatin, is going to inhibit the release of growth hormone from the anterior pituitary. Similarly, then we have thyrotropin releasing hormone, which is going to act on the anterior pituitary and causing release of thyroid stimulating hormone, which is going to act on the thyroid gland. And then we have prolactin inhibiting hormone, also known as dopamine, basically, which is going to have a inhibitory effect on the prolactin release, whereas the thyrotropin releasing hormone is going to have a positive effect of enhancing effect for the release of prolactin, which is going to have a role in the lactation. Then we have corticotrophin releasing hormone, is released from the hypothalamus, is going to act on the anterior pituitary to release adrenocorticotropic hormone, which is going to act on the adrenal cortex. And we should control the synthesis of corticosteroids in the body, right? Now, coming to the characteristics of hypothalamic releasing and inhibiting hormones, basically these hypothalamic releasing and inhibiting hormones are carried directly to anterior pituitary gland via a hypothalamic hypophyseal portal veins, right? I will show you in the picture in the next slide. And then this secretion is not continuous, it is pulsatile in nature, okay? And but these hormones have very short half-life, so the actions on pituitary are of short duration. They stimulate release and synthesis of anterior pituitary hormones. And then they stimulate hyperplasia and hypertrophy of target cells. Similarly, their actions are limited by negative feedback mechanism. There is excessive hormones in the serum. They will send the negative signals to hypothalamus to stop releasing further releasing hormones. Okay. In this way, this system goes on in the body. Now, coming to the anterior pituitary hormones, we have the growth hormone, which was released under action of growth hormone releasing hormone from the hypothalamus. Okay, this is the growth hormone, or somatotropic hormone, which is growth promoting effects on most of the cells of the body. Then we have a prolactin, right, which are under control of thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus, and this prolactin is going to act on the mammary glands and is causing the growth of the mammary glands and milk production. And then we have the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. They are both going to release from the anti-pituitary under action of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. Then we have thyroid stimulating hormone, which is released from the anterior pituitary under the action of thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus. And then we have adrenocorticotropic hormone, which is going to release from the anterior pituitary under action of corticotrophin releasing hormone, is going to act on the adrenal cortex. So these were all the anterior pituitary. Now, coming to posterior pituitary hormones, we usually have just two hormones from the posterior pituitary. The number one we have is the antidiuretic hormone, or vasopressin. As antidiuretic hormone is its self-explanatory words, that means that they are going to inhibit the diuresis from the body or the water excretion from the body. If there is deficiency of antidiuretic hormone in the body, then excess water is excreted out from the body, and it's leading to a condition which is known as diabetes insipidus, right? So and then we give this antidiuretic hormone to treat that condition. The second alternative name, this is also known as vasopressin. Why we call it vasopressin? Because it causes the vasoconstriction of vessels. That's why it's known as vasopressin. So as you can see in this diagram, that from the posterior pituitary, this vasopressin is released, or antidiuretic hormone is acting on the proximal renal tubules and is causing the reabsorption of the water, right? Similarly, it is shown here, this is antidiuretic acting on the kidney tubules. Then we have the second hormone we have is the
Oxytocin, right? Oxytocin basically is released from the posterior pituitary. It's going to act on the two targets. The one is it's going to act on the uterine muscles and it will cause the uterine contractions. Secondly, it will cause the milk ejection. Basically, milk production or the mammary glands were under the control of prolactin hormone, whereas the ejection of milk from the mammary gland is under the control of this oxytocin hormone, right? I hope it will be clear to you, and you must be knowing it from your physiology. Now coming to the pharmacologic applications of hypothalamic and pituitary hormones. Well, where do we use these hypothalamic pituitary hormones? We use it as a replacement therapy in hormone deficiency state. Suppose there is growth hormone deficiency, or there's gonadotropin releasing hormones deficiency, or any other hormone deficiency, then we are going to use these hypothalamic and pituitary hormones. And suppose if there is excess hormones in the body, excess production of pituitary hormones, then we can use these as antagonist for the diseases that result from excess production of pituitary hormones, right? And then we have, if we want, we can use it as a diagnostic tool for performing stimulation tests to diagnose whether the body is in hypo functional endocrine states or hyper functional endocrine states. Suppose if we give the hormones, if there is some deficiency in the endocrine system of the body, it will get normalized. But if it is disease due to some hyper functional state, it will get exaggerated. So it also acts as a diagnostic tool. So as a replacement therapy, as an antagonist, and as diagnostic tools, we use these hypothalamic and pituitary hormones. So this is the basically chart showing the links between the hypothalamic and anterior pituitary and target organ. We have the anti-pituitary hormone, growth hormone, which is also known as somatotropin, and it is released under direction of growth hormone releasing hormone. Is going to enhance the secretion, and whereas the somatostatin is going to inhibit the secretion of growth hormone. And the target organs will be liver, muscle, bone, kidney, and others. So and there are primary organ hormone mediators. Suppose this growth hormone is then going to have its mediators, and that's mediators. Second mediators, they are the insulin like growth factor. For the growth hormone, the mediator will be insulin like growth factor 1. Now moving forward to the next hormone, we have thyroid stimulating hormone, which is released under direction of thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus. And this thyroid stimulating hormone, after release from the pituitary, is going to act on the thyroid, and from the thyroid it will cause release of thyroxine and tyrosine T4 and T3. Okay, then we have adrenocorticotropic hormone, which will release under action of corticotropin releasing hormone from the hypothalamus, and this adrenocorticotropin will act on the adrenal cortex to cause release of glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgens. Then we have follicle stimulating hormones and luteinizing hormone. They will release in direction of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus, and these will go after release of the pituitary and act on the gonads, and they will cause the secretion of estrogen, progesterone, and testosterone. Then we're moving forward to prolactin. It is basically its release is enhanced by the thyrotropin releasing hormone. Well, its release is inhibited by the dopamine, right? And this prolactin is going to act on the breast. Target organ is breast. Okay, so this was all your revision, and to get it memorize in your memory, or to get fix it your mind, right? So moving forward into the mechanism of action of these hormones. Well, regarding the growth hormone and prolactin, they are basically, we studied the mainly different types of mechanism of action of these, like G protein coupled and JAK-STAT family. But so the growth hormone and prolactin, basically they are going to act through the JAK-STAT family. And what is JAK-STAT family? Basically we have two proteins here. The JAKs means Janus kinases, and when these cytokine molecules, suppose the growth hormone or prolactin, bind with these receptors, there will be dimerization of JAK proteins, and then the JAK proteins, dimerization receptors, and they will activate the JAK proteins, and these JAK proteins will activate the STAT transfer signal transducers and activate the transcription, and then these proteins will cause the transcription of genes, and then it will lead to the further protein synthesis, and in this way signal transduction will occur and required protein synthesis will occur. Okay, and so moving forward to the
we have the other hormones. So basically, the out of all these hormones, this prolactin and the growth hormone is mediated by the JAK-STAT family, whereas rest all of the hormones is, they are controlled through G protein coupled mechanisms. So we have TSH, FSH, LH, they all are controlled through the G protein coupled. What happened? We have suppose GS stimulatory protein. What it will do? It will go and it will activate the adenylyl cyclase, which will cause the ATP to be converted into cyclic AMP, and this phosphate group will be used to phosphorylate the enzyme. Enzyme phosphorylation will occur, and then the biological effects of the will produce in the body. Similarly, ACTH will also follow this G protein coupled mechanism. So these were the basically uh, receptor transduction mechanisms of these hypothalamic and pituitary hormones. Now, going into detail of the anti-pituitary hormones, beginning with anti-pituitary hormones, the first one we have that is the growth hormone, or it is also known as somatotropin. So, regarding introduction of growth hormone, it is a peptide hormone, and its important effects are on the lipid, carbohydrate metabolism, and on lean body mass and bone density. And its growth promoting effects are primarily mediated by, I told you before also, that was probably, if you remember, it was insulin like growth factor 1, or it's also known as somatomedian C. This is the basically mediator of growth hormone, which is involved in the growth promoting effects. And some of the effects are also controlled directly and through insulin like growth factor 2, but it is to the lesser extent. So moving forward to the chemistry of growth hormone somatotropin, basically it's a 191 amino acid peptide with 2 self-hydryl bridges, and we have recombinant human growth hormone like somatropin, which has 191 amino acids, whereas somatron, which has 192 amino acids. Now, regarding the pharmacokinetics of growth hormone or somatotropin, basically its half-life is 20 to 25 minutes, and it is given subcutaneously 3 to 6 times per week. And somatropin injectable suspension is a basically long-acting preparation of recombinant human growth hormone. It is enclosed within microspheres, which causes release of recombinant human growth hormone for about 1 month. It increases half-life, right? And it will be released for the long time basically. And again, it's just recap. We discussed it that the growth hormone mediates its effects via cell surface receptors of the JAK-STAT cytokine receptor superfamily. It's also shown in this figure. Some growth hormone bind with this receptor is activated the genase kinases, and then it activates the STATs protein, and the STATs causes the transcription of target genes, and then these proteins basically they are going to control the metabolism, growth, proliferation, and differentiation. Now moving forward to the its pharmacodynamics, basically this growth hormone has complex effects on the body growth, muscle growth and composition, carbohydrate, protein, and lipid metabolism. And again these growth promoting effects are mediated through mainly insulin like growth factor 1. And growth hormone has anabolic effects on muscle, that they are going to build up the muscles, whereas they have catabolic effect in lipid cells, right? So moving forward, we have growth hormone, and now interesting thing is that, as we said, that growth hormone is going to act through its mediator, that is insulin like growth factor 1. But regarding insulin sensitivity, they have opposite effects. How come? It's this, like this growth hormone basically reduces the insulin sensitivity, which results in mild hyperinsulinemia and increased blood glucose levels, right? It basically desensitizes the insulin. It इंसुलिन की sensitivity को reduce करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़े, इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर रहा, ब्लड जो है वो ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज करेंगे, जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, इट विल लीड्स टू increased blood glucose level. Whereas the insulin like growth factor 1, it is going to have the opposite effect. It's basically have insulin like effects acting through its own insulin like growth factor 1 receptors or through insulin receptors. What it will do, it will lower the serum glucose. ठीक है, सीरम ग्लूकोज को कम करेगा, और अगेन जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन उसको रिड्यूस करेगा. इट विल प्रमोट एंट्री ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनसाइड द सेल्स, राइट? सो दे बोथ हैव opposite effects on insulin sensitivity. I hope you catch this concept. Well, this is another diagram showing you that there are effects of circadian rhythm like stress and cortisol and phosphorus. All they are going to affect the growth hormone releasing hormones levels and the growth hormone release and its effects on the body.
Well, there are also effect of sleep and exercise on growth hormone secretion. Like growth hormone is increased during strenuous exercise, peak surge occurs, and during sleep. These both are the conditions where there is a surge of growth hormone occurs. Right now, coming to clinical pharmacology. Now regarding the growth hormone deficiency, what is the criteria for diagnosis of growth hormone? Basically we have two criteria. Suppose if there is a growth rate below 4 centimeter per year, and if there is absence of serum growth hormone response to growth hormone secretों का, आपने दो कोई growth hormone secretों का ऑक्स दिए और उसको देने के बावजूद भी growth hormone release नहीं हो रहा, ठीक है, serum levels growth hormone की कम है, that means there is a growth hormone deficiency. और growth rate क्या हो, कम हो, ठीक है. सो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और किस तरीके से मैनिफेस्ट करती है? जनरलाइज्ड ओबेसिटी होती है, रिड्यूस्ड मसल मास होता है, एंड रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट होता है. Now coming to the drugs, you are already familiar with the clonidine receptor to adrenergic agonist, levodopa, which is a dopaminergic agonist, and exercise. These two drugs and exercise are the factors which basically increases the growth hormone releasing levels. This researchers have proved it, right? So now coming to the clinical uses of recombinant human growth hormone, we can use a recombinant growth hormone in pediatric patients with short stature. For example, Prader-Willi syndrome. This is basically an autosomal dominant genetic disease, and it's associated with growth failure. Obesity होती है, carbohydrate intolerance होती है. This child is basically suffering from the Prader-Willi syndrome, having the obesity, growth failure, and carbohydrate intolerance. So what we will do, growth hormone treatment, it will decrease the body fat and it will increase the muscle mass, linear growth, and energy expenditure. So talking about the other clinical uses of recombinant growth hormone, it can be given in the Turner syndrome, in the idiopathic short stature, in chronic renal failure, in pediatric patients इनमें stunted growth हो जाती है, या फिर small for gestation age conditions at birth उनके अंदर भी growth hormone दी जा सकती है. And there are also other uses of growth hormone, like it can be used in anti-aging programs. For example, the ladies using the creams, and there it could be the growth hormone there, which will decrease the formation of the wrinkles, and it will promote the proliferation of cells and new growth of the cells. And similarly, so it's used in anti-aging programs. Similarly, it's also used by the athletes to increase their muscle mass, and but it is banned by the International Olympic Committee. And it is also used by the dairy cattle to increase milk production. By recombinant provide growth hormone, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा common हो रहा है, जो कहते हैं कि भैंसों को टीके लगाए जाते हैं दूध देने के. So basically, this the growth hormone. This is one of this recombinant bovine growth hormone, which is given to dairy cattle to increase the milk production, basically. And it given to the AIDS patient, जिनके अंदर जो है वो muscle mass reduce हो जाता है, और so we can give this to the AIDS patient. And then we can give also it to the patients with short bowel syndrome. Resection हो गई, for example bowel की किसी भी surgeries के दौरान, और short bowel syndrome हो, और वो TPN पे total parenteral nutrition पे हो, उनकी body जो है वो जो है वो सही तरीके से absorption नहीं हो पा रही है, ठीक है, then we can give them to the growth hormone. So talking about the clinical uses of recombinant human growth hormone, primary जो therapeutic objective growth, basically it's clinical condition जो हमारे पास है growth failure in pediatric patients associated with growth hormone deficiency में हम ले सकते हैं. Chronic renal failure में, as we discussed, it is just summary of all this paragraph, basically the summary जो हमने अभी तक discuss किया है, ठीक है. So we can give in the growth hormone, and we can give deficiency, we can give in a chronic failure, chronic renal failure जिसके अंदर जो है growth stunted हो सकती है. We can give in a Prader-Willi syndrome, Turner syndrome, small for gestation age with failure to catch up by age 2, or either very short station pediatric patients में भी दे सकते हैं. This all regarding for the purpose of growth. Apart from the growth, we can give the growth hormone to improve the metabolic state, to increase the lean body mass and sense of well-being. Suppose अगर adults के अंदर growth hormone deficiency हो जाए. Similarly, we can give into the AIDS patient जिसमें wasting हो जाती है specifically, तो उनके अंदर lean body mass increase करने के लिए, weight और physical endurance बढ़ाने के लिए, we can give this growth hormone. Similarly, जो short bowel syndrome होता है patients में, जो कि
TPN पे होते हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनल सपोर्ट उनको मिल रही थी, उनका जो GI फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं. ठीक है. Talking regarding the toxicity and contraindications of growth hormone, it has side effects like intracranial hypertension करा सकता है, scoliosis करा सकता है, otitis media करा सकता है, hypothyroidism करा सकता है, pancreatitis करा सकता है, gynecomastia, peripheral edema, myalgias, arthralgias, and contraindication जो है we should not give it to the any patient with malignancy के अंदर ये contraindicated है, we should not give it. Similarly, now coming to mecasarmin. What is mecasarmin? Basically, it is a recombinant human insulin-like growth factor 1. जो हम बार बार अभी तक बात करते आए हैं, जो ग्रोथ हार्मोन का जो मेडिएटर है इंसुलिन-like growth factor 1, जिससे जो है वो सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन के. तो हमने बेसिकली क्या किया, उसी इंसुलिन-like growth factor 1 से रिलेटेड जो है एक ड्रग बनाई विच इज नोन एज मेकासर्मिन. ये रिकम्बिनेंट फॉर्म है ह्यूमन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 की. ठीक है. सिमिलरली एक और फॉर्मुलेशन भी हमने बनाई है विच इज नोन एज मेकासर्मिन रिनफाबेट. बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने प्रिपेयर किया, साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया. It is a complex of recombinant human insulin growth factor 1 and recombinant human insulin growth factor binding protein 3 के साथ अगर ये दो हों तो then it is known as mecasarmin rinchabate. ठीक है. As you can see in this picture that growth hormone releasing hormone growth hormone release करा रहा है pituitary. ये anti growth hormone basically जो है ये सारे टारगेट टिश्यूज पे एक्ट करके इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 रिलीज करा रहा है और जो कि सेकेंडरी टारगेट टिश्यूज पे जाके अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सपोज अगर ऐसी ऐसी कंडीशन हो बॉडी के अंदर जिसमें ग्रोथ हार्मोन सीरम ग्रोथ हार्मोन के लेवल तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, डेफिशिएंसी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 की हो रही है एंड सीरम ग्रोथ हार्मोन इज नॉर्मल, और जो है वो सेकेंडरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं डेफिशिएंसी के, then we can give this drug mecasarmin जो कि severe insulin growth factor 1 deficiency में जो कि non responsive to exogenous growth hormone, आप growth hormone बाहर से देते जाएं लेकिन वो convert नहीं हो रहा है insulin growth factor 1 में, उसकी deficiency हो रही है, then we can give this mecasarmin. इसकी डोज क्या है, सबकुटेनियस 0.04 to 0.08 है, बीडी में हम देते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स जो इसके हैं दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया कराता है. क्यों हाइपोग्लाइसीमिया कराता है? इफ यू रिकॉल आई टोल्ड यू कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के जो है ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं इन इंसुलिन सेंसिटिविटी. बेसिकली ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराता है, क्या करता है, इंसुलिन के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, ठीक है. सो इट कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, इट कैन आल्सो लीड टू इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन एंड इट कैन cause the elevation of liver enzymes और adenotonsillar hypertrophy भी करा सकता है, ठीक है. So this was all regarding mecasarmin. Now I have a picture. If you focus it, you can tell me what's shown in this picture. Well, you will, if you would have been there, you would have told me yes, this is a person or patient with gigantism. They are gigantism, and this is a person with acromegaly. So how you will differentiate between a gigantism and acromegaly? Basically, they are the एडिनोमास, पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेटिंग एडिनोमास है, और अगर वो बेसिकली दोज एडिनोमास अगर बिफोर द फ्यूजन ऑफ एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स इट कैन लीड टू जाइजेंटिज्म, और अगर वो एडिनोमास जो पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेटिंग जो एडिनोमास है फिर अकर्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स देन इट कैन लीड टू द एक्रोमेगाली. दिस इज द एक्रोमेगाली, right? So as I told you, okay, we give these hormones in deficiency states, right? And the second use was of the hypothalamic hormone. So we give also these preparations in case of excess of hypothalamic or pituitary hormones. So these are the case. Suppose if there is excess of growth hormone in the body, and it's leading to gigantism and it is leading to acromegaly, ठीक है. So we can give the growth hormone antagonist, ठीक है. So if we go for the classification of growth hormone antagonist, we have somatostatin analogs, and in the somatostatin analogs we have the octreotide, we have the lanreotide, and we have the pygmalisamide, right? So these are basically somatostatin analogs, and this is basically the growth hormone antagonist pygmalisamide. We'll go in detail. First of all, we will see the what is somatostatin. Basically, somatostatin is a 14 amino acid structure, and its function is that it inhibits the release of somatostatin. Basically, normally हमारी body में release हो रहा होता है, ठीक है. It's a growth hormone inhibiting hormone, right? और ये growth hormone की रिलीज को इनहिबिट करने के साथ साथ ग्लूकागोन, इंसुलिन और गैस्ट्रिन, इन सब हार्मोन्स रिलीज को भी इनहिबिट कर रहा होता है. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हम थेरेपेटिकली इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 23 मिनट्स है, इसकी थेरेपेटिक यूजफुलनेस बहुत लिमिटेड है. देन व्हाट वी डिड,
that researchers designed a drug जिसमें कि वो somatostatin की तरह ही काम हो लेकिन उसकी half life क्या हो बड़ी हुई हो. Then we designed another drug which is Oxytocin, which is basically somatostatin analog. ये क्या करती है, इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी. ठीक है, इसके तरफ फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो इट हैज हाफ लाइफ ऑफ 80 मिनट्स एज कंपेयर टू ऑफ सोमैटोस्टेटिन जिसकी 1 to 3 मिनट्स है. सेकेंडरली इट इज 45 टाइम्स मोर पोटेंट देन सोमैटोस्टेटिन, ज्यादा पोटेंट है. ठीक है, but it is only twice as potent in reducing insulin secretion. So this is a good point. So it results in rare hyperglycemia. उससे क्या होगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो. ठीक है, इंसुलिन की सिक्रीशन को बहुत ओनली ट्वाइस टाइम जो है ये पोटेंट है कि इंसुलिन सिक्रीशन को कम करे. ठीक है, इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो नहीं होगा. Now moving forward to therapeutic uses of octreotide. Well, it is a treatment for a variety of hormone secreting tumor in a dose of 50 to 200 microgram given subcutaneously TTS. इसको हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, एक्रोमेगाली में यूज कर सकते हैं. We can use in a diarrhea, secretory हो, HIV associated हो, diabetic हो, chemotherapy हो या radiation induced. Why we are giving it as we discussed previously हो सके ये सब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के साथ साथ दूसरे हार्मोन्स को भी लाइक फॉर एग्जांपल गट के हार्मोन्स को भी एक्सेसिव जो सिक्रीशन डायरिया करा रहा है उसको भी इनहिबिट करता है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इट हैज इफेक्ट्स ऑन द वेसल्स कि ऑक्सीटाइड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, तो इस वजह से हम इसको इसिफिजियल वेराइसिस में जिसमें वेसल्स बहुत ज्यादा इंगॉर्ज हो जाती हैं और अपर जीआई ब्लीडिंग कराती हैं, वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी हम ऑक्सीटाइड यूज कर सकते हैं. राइट, सो इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स की हम बात करें तो इट कैन लीड टू nausea and vomiting, abdominal cramps, flatulence and steatorrhea. अच्छा, उसके बाद इट कैन लीड टू biliary tract abnormalities like gallstones, sludge without stones, biliary dilation. इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया और कंडक्शन की डिस्टर्बेंसेस भी कराता है. ठीक है, now coming to another somatostatin analog which is known as lanreotide. ठीक है, this is a long acting octapeptide formulation है somatostatin की और ये भी अप्रूव्ड हुई है फॉर एक्रोमेगाली. ठीक है, और इसके भी कंपैरेबल इफेक्ट्स हैं टू octreotide in reducing growth hormone levels and normalizing insulin like growth factor 1 concentration. ठीक है, इसके बाद दिस वाज द lanreotide. अभी तक हमने दो somatostatin analogs पढ़े. Another drug we have pyrizinamide which is basically growth hormone antagonist. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है. इसकी जो पेक फॉर्म है बेसिकली इसका फायदा क्या होता है कि इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है. डेरिवेटिव जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल डेरिवेटिव है म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन का, इट इंक्रीजेस हाफ लाइफ. और इसका इसका मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक्स द कन्फर्मेशन चेंजेस रिक्वायर्ड, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए जो हो रही चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं उन कन्फर्मेशन चेंजेस को ब्लॉक कर देता है. अगेन वी आर गोइंग टू यूज इट इन एक्रोमेगाली. ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हैं. अच्छा, now we have a question. So up till right now हमने क्या क्या डिस्कस किया, we discussed normal physiology, endocrine system की हमने डिस्कस की कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों जो है बेसिकली हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा है. हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो कि जाके एंटी पे एक्ट करके हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, वो टारगेट ऑर्गन पे जा रहे हैं. ठीक है, इसमें हमने जो इनिशियली हमने एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन डिस्कस किया डिटेल में. ग्रोथ हार्मोन का जो सेकंड मीडिएटर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके इफेक्ट्स रिड्यूस करने में रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हमने पढ़ी कि अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ ग्रोथ रेट डिक्रीज है 4 सेंटीमीटर पर ईयर. ठीक है, या फिर ग्रोथ हार्मोन चिल्ड्रन बॉक्स देने के बावजूद भी जो है ग्रोथ हार्मोन के लेवल इंक्रीज नहीं हो रहे तो दैट मींस वी लेबल इट एज अ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और इसमें हम इसको ग्रोथ हार्मोन देंगे. तो ग्रोथ हार्मोन के अगर हम यूजेस पे आए तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हम दे रहे थे ग्रोथ हार्मोन प्रेडरविलाइ सिंड्रोम में, जिसमें और अगर आप क्लिनिकली देखें तो ग्रोथ हार्मोन कैसे मैनिफेस्ट करता है, जनरलाइज्ड ओबेसिटी होता है, ओबेसिटी होती है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस होती है, मसल मास रिड्यूस हुआ होता है. सो यू कैन गिव इन द प्रेडरविलाइ सिंड्रोम में हम दे सकते हैं, इसको टर्नर सिंड्रोम में दे सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो हम शॉर्ट स्टेचर के अंदर क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स में, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में दे सकते हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो. और हमने इसके यूजेस फिर पढ़े, इसमें एंटी एजिंग प्रोग्राम्स में हम ग्रोथ हार्मोन यूज कर रहे हैं, डेयरी कैटल्स के लिए यूज हो रही है, एथलीट्स यूज करते हैं बट इट इज बैन्ड बाय द आईओसी. ये इसके सारे यूजेस थे ग्रोथ हार्मोन के, बट इट वाज हैविंग दिस रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो था इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी थे. और जो रिकम्बिनेंट दिस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन था उसकी हमने दो तरह की पढ़ी थी, सोमाट्रोपिन और सोमाट्रम. ठीक है,
जिसमें जो है अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस था. एंड नाउ कमिंग टू एडवर्स इफेक्ट्स भी ये कॉज करते हैं दिस ग्रोथ हार्मोन, कैन लीड टू इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, स्कोलियोसिस, आर्थराल्जियाज, मायाल्जियाज. ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की मैलिग्नेंसी. ठीक है, हमने मैलिग्नेंसी में नहीं देना. फिर और ड्रग्स हमने पढ़ी मेकासर्मिन व्हिच वाज बेसिकली जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है उसकी ही रिकम्बरेंट फॉर्म थी. ठीक है, और मेकासर्मिन रेनफाबेट पढ़ा जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन थी भी, ग्लाइकोप्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन थी भी इसके साथ थी. ठीक है, so and if we were using this mecasermin in insulin like growth factor 1 deficiency हो, जब अगर growth hormone लेवल्स नॉर्मल है बट insulin like growth factor 1 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी डेफिशिएंसी के अंदर हमने mecasermin दिया. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस किया अगर ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए कैन लीड टू रजाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली. और फिर इसमें हमने दो तरह की ड्रग्स पढ़ी मेनली, एक हम सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स दे सकते हैं, पैगविसमिन दे रहे हैं. फर्स्ट हमने सोमैटोस्टैटिन स्टडी किया कि सोमैटोस्टैटिन नॉर्मली हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, 1 to 3 मिनट्स की इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है. ठीक है, इसकी थेरेपेटिक यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से हमने जो है इसकी फॉर्मुलेशंस बनाई विद लॉन्ग हाफ लाइफ लाइक वी हैव द ऑक्सीटाइड एंड वी हैव लैंड्रियोटाइड. ठीक है, जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, दे आर मोर पोटेंट देन द सोमैटोस्टैटिन. ठीक है, एंड देन सिमिलरली पैगविसमिन हमने पढ़ी जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि क्या करेगी उसकी जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रही हैं रिसेप्टर की सिग्नल ट्रांसलेशन उसको ब्लॉक करेगी. So this was just revision for you. But still up to right now we discussed. Now I have a question that a 7-year-old boy is newly diagnosed with Turner syndrome after complete workup. He was put on somatotropin therapy by his endocrinologist. Now, which of the following signal transduction mechanism is followed by this hormone? Now, if you you have been in class, you would have answered me, but I have given this MCQ in your assignment. You will answer me in your assignment, and I will come to know that how much you can grasp the concepts. Now, I have another question also for you that a 7-year-old boy presents to OPD with complaint of growth failure. On examination, he's small for height for a given age. The blood test reveals insulin-like growth factor 1 deficiency. Which of the following will be the drug of choice for this patient? You would also answer me this MCQ in your assignment. Moving to our next hormones. After the growth hormones, we have the next hormone is the gonadotrophins. ठीक है, हमने इसका डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. हमने जो ग्रोथ हार्मोन का डिस्कस किया था इट वाज जैकस्टैट फैमिली से मेडिएट रहा था. हेयर जो है हमारे पास गोनाडोट्रोफिन जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज्म से जो है कंट्रोल हो रहा है. वी हैव एफएसएच, एलएच एंड ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन्स एंड डायरिंग्स ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स. इनकी फार्माकोडायनेमिक्स हम डिस्कस कर ली, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू हो रही है. अच्छा, इनको हम यूज काम कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दिस गोनाडोट्रोफिन्स इन द ओव्यूलेशन इंडक्शन टू इंड्यूस ओव्यूलेशन वुमेन विद एन ओव्यूलेशन ड्यू टू हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म हो या पीसीओएस की कंडीशन हो या ओबेसिटी की वजह से नहीं हो रही है ओव्यूलेशन. सो यू कैन यूज दीस गोनाडोट्रोफिन्स फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन. इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी के अंदर भी हम गोनाडोट्रोफिन्स यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसके टॉक्सिसिटी या कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे आए तो अगर इसको हम दे रहे हैं ओवुलेशन के लिए तो इट कैन लीड टू ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी करा सकता है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं. ठीक है, हेडेक, डिप्रेशन और एडीमा भी हो सकता है. एंड इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. अगर ऑलरेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग हो तो ऐसे पेशेंट्स को नहीं देना. ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर थर्ड हार्मोन इज अ प्रोलैक्टिन हार्मोन. बेसिकली इट स्टिमुलेट्स द लैक्टेशन. जैसे हम देख रहे हैं ट्राइट्रोपिन रिलीज हार्मोन बेसिकली प्रोलैक्टिन की रिलीज को करा रही है और डोपामिन इनहिबिट कर रहा होता है. अगर सपोज प्रोलैक्टिन की रिलीज बहुत ज्यादा हो जाए इट कैन लीड टू हाइपरप्रोलैक्टिनिटी प्रोड्यूसेस अ सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है एमेनोरिया हो जाता है, गैलेक्टोरिया हो जाता है इन वुमेन एंड लॉस ऑफ लिबिडो एंड फर्टिलिटी इन मैन हो जाती है. ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? डोपामिन एगोनिस्ट. बेसिकली जो प्रोलैक्टिन और डोपामिन होते हैं वो एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रहे होते हैं. एंटागोनाइज में अगर हम डोपामिन क्या कर रही होती है, प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर रही होती है. ठीक है, तो अगर प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाए तो डोपामिन देने से या डोपामिन एगोनिस्ट देने से क्या होगा, प्रोलैक्टिन के लेवल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है, सो डोपामिन एगोनिस्ट जो हमारे पास है वी हैव दो तरह की डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, अर्गोट डेरिवेटिव्स, नॉन अर्गोट. अर्गोट डेरिवेटिव से तो यू विल बी ऑलरेडी फेमिलियर, आप पढ़ चुके हैं अर्गोट डेरिवेटिव्स पहले भी. वी हैव ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन. एंड नॉन अर्गोट डेरिवेटिव्स में वी हैव क्विनाकोलाइड. हम यूज ही कब कर रहे हैं, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में. जब भी हमने पढ़ी कंडीशन फिजियोलॉजिकल लैक्टेशन में कुछ मदर्स के अंदर बहुत ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो है मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर भी ये यूज की जा चुकी है. एक्रोमेगैली में हम यूज कर सकते हैं. पार्किंसंस डिजीज में आप पार्किंसंस में पढ़ चुके हैं, हमने डोपामिन यूज किए थे. ठीक है, so these are the clinical uses of dopamine agonist. Now moving to toxicity of dopamine agonist.
इट कैन लीड टू nausea, headache, lightheadedness, orthostatic hypotension करा सकती है, fatigue करा सकती है, erythromelalgia करा सकती है। erythromelalgia में क्या होता है, बेसिकली इससे स्किन की रेडनेस हो जाती है, ठीक है, इचनेस होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म होता है इसका, तो लीड टू erythromelalgia। स्पेशली ये फीट को अफेक्ट कर रहा होता है, रियली हैंड्स को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये कोल्ड इंड्यूस्ड पेरिफेरल डिजिटल वेजोस्पैज्म करा सकता है। मेनली जो अर्गोट टेरिटिप्सिस हैं जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइट, कैबरगुलिन जो है, ये जो है बेसिकली कराते हैं डिजिटल वेजोस्पैज्म। सिमिलरली वेलवुलर हार्ट डिजीज कैबरगुलिन करा सकती है, ठीक है। So this was all about the dopamine agonist. Now, up till now we have discussed all the anti-pituitary hormones. हमने growth hormone discuss कर लिया, ठीक है। growth hormones के बाद हमने gonadotrophins discuss किए जो कि हम deficiency की states में देंगे, like anovulation हो और ovulation नहीं हो रही हो, ठीक है, या male infertility में। इसी तरीके से हमने prolactin discuss कर लिया, ठीक है। Similarly we discussed the dopamine agonist जो हम use कर रहे हैं hyperprolactinemia में, ये physiological lactation ज़्यादा हुई हुई है या Parkinson's में हम देखें। Now we are left with the posterior pituitary hormones, जो कि basically दो hormones थे, they were the vasopressin और antidiuretic hormone और oxytocin. So we begin with the oxytocin. Basically it stimulates uterine contractions and milk letdown कराता है, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन था वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करा रहा था, और मिल्क लेटडाउन जब ऑक्सीटोसिन करा रहा था। इसकी भी फार्माकोडायनेमिक्स जी प्रोटीन कपल्ड है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जो प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन थे, दे वर कंट्रोल्ड बाय द जैक-स्टैट सुपरफैमिली, व्हेयरएज ऑल रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से काम कर रहे होते हैं, बेसिकली एक्ट कर रहे होते हैं। Where can we use this oxytocin? We can use for the induction or augmentation of labor. जब आप गायनी के वार्ड्स में जाएंगे, वहाँ during delivery you will use it. oxytocin different नामों से आ रही होती है, सेंटो के नाम, सेंटोसिन और इस तरह से different brands के नाम से आ रही सकती है। बेसिकली क्या करती है, लेबर को ऑगमेंट करने के लिए, इंड्यूस कराने के लिए हम ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सपोज अगर आपने बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन लगा दी पेशेंट को, तो फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकता है, या यूट्राइन भी रप्चर हो सकता है, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन जो ऑक्सीटोसिन की है वो क्या कर सकती है, वेसोप्रेसिन के रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन के साथ साथ जो है वो फ्लूइड रिटेंशन करा सकती है बॉडी में, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन में से हार्ट फेलियर, और जब हाइपोनेट्रीमिया होगा, जो सोडियम आयंस जो हैं वो डिसबैलेंस होंगे, कैन लीड टू सीजर्स एंड डेथ, और हाइपोटेंशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं ऑक्सीटोसिन के। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की आपने कब नहीं देना, अगर ऑलरेडी फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, आपने नहीं देनी उस पेशेंट को ऑक्सीटोसिन की, या फीटल की मैल प्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल इसकी फेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, वो और प्रेजेंटेशन है बेबी की, उसमें आपने नहीं देना। ये ऑलरेडी कोई प्लेसेंटल रप्चर का केस है, उसमें नहीं देना। या कोई प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी एक्सटेंसिव इस पेशेंट की हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स को आपने ऑक्सीटोसिन नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव ऑक्सीटोसिन के एंटागनिस्ट भी हैं, ठीक है। हमने अभी तक ये डिस्कस की है चीज, से मैं आपको बता दूं, अगर डेफिशिएंसी स्टेट्स होंगी तो हम वो हार्मोन देंगे, और उसके अगर एक्सेसिव होगा, उसको प्रिवेंट करनी होगी डिजीज स्टेट को, तो हम उसके एंटागनिस्ट देंगे। तो सिमिलरली वी हैव एटोसिबान, क्या है, एंटागनिस्ट ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का। ये हम कब दे रहे होते हैं, प्री टर्म लेबर में, हम लेबर को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, प्री टर्म हो गया है, ठीक है, तो टोकोलिसिस के लिए हम एटोसिबान देते हैं। 1998 में एफडीए ने डिसाइड ये हुई थी, बट एफडीए डिसाइडेड इसको अभी भी प्रूफ नहीं किया हुआ, क्योंकि कुछ इसकी एफिकेसी और सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट हार्मोन व्हिच इज बेसिकली द वेसोप्रेसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसकी बेसिकली एंटी डायरेटिक प्रॉपर्टीज में है, वेसोप्रेसिव प्रॉपर्टीज में, आई टोल्ड यू बिफोर टू। सो डेफिशिएंसी इस हार्मोन से क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाती है, जिसमें आपको बताया था कि वाटर का एक्सक्रीशन बॉडी से बहुत ज्यादा होगा, वाटर रिटेन नहीं होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डायबिटीज इंसिपिडिस जाएगा। इसकी फार्माकोडायनामिक्स अगेन दिस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अच्छा, अब इसके रिसेप्टर्स पे आते हैं। बेसिकली दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, V1 एंड V2 रिसेप्टर। जो V1 रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में हैं, और वो क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कौन से मैकेनिज्म से, GQ coupled protein phospholipase C मैकेनिज्म से। सिमिलरली वी हैव V2 रिसेप्टर्स जो कि कहाँ पे, रेनल ट्यूब्यूल सेल्स पे हैं, और क्या कर रहे हैं, डायूरेसिस को रिड्यूस कराते हैं थ्रू वाटर रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स via G stimulatory protein और adenyl cyclase की मैकेनिज्म से। So you need to remember these mechanism। V1 जो है वो क्या कर रहा है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा है, GQ कपल्ड है, फॉस्फोलाइपेज है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पे आप यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जबकि यहाँ पे V2 रिसेप्टर्स में क्या हो रहा है कि
renal tubule सेल से क्या करा रहा है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, एंड थ्रू जी स्टिमुलेटरी एग्नाइल साइक्लेज के मैकेनिज्म से थ्रू हो रहा है। सिमिलरली कुछ एक्स्ट्रा रीनल भी V2 लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, रिलीज रेगुलेट कर रहे होते हैं रिलीज ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 8 की और वॉन विल्बरेंट फैक्टर की, ठीक है, जो क्या करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करा रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट रिसेप्टर्स हैं और वैसोप्रेसिन के इनके इस पे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, V1 V2 पे एक्स्ट्रा रीनल V2 लाइक रिसेप्टर्स पे। नाउ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि हम यूज कर रहे हैं पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस में, क्या करेगा, रिटेन करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। अच्छा वेसोप्रेसिन है तो वेसो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, वी कैन यूज इन इसोफेजियल वेराइसिस ब्लीडिंग या कोलोनिक डायबिटिक ब्लीडिंग में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा एक और भी इसका यूजेज है कि इसने ये एपिनेफ्रीन को भी रिप्लेस कर सकता है इन एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट में, रिससिटेशन प्रोटोकॉल में फॉर पल्सलेस अरेस्ट के लिए। पल्सलेस अरेस्ट में चला गया तो 40 यूनिट्स आप आईवी दे दें तो उसमें जो है ये रिससिटेट कर सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो इसने एपिनेफ्रिन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन यूज द वेसोप्रेसिन फॉर इट। अच्छा उसके बाद जो इसकी टॉक्सिसिटी क्या, ऑब्वियसली अब आप देखें जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है तो वाटर का बॉडी में रिटेन हो रही है, हाइपोनेट्रीमिया करा रहा है, जब सोडियम कंसंट्रेशन डिसबैलेंस हो रही है, कम हो रही है, दैट कैन लीड टू सीजर्स। ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अमीनो की वेसोप्रेसिन क्या कर रही है, वेसो कंस्ट्रक्शन करा रही है, तो हम क्या करना है कॉरोनरी आर्टरी की डिजीज में नहीं देंगे, ऑलरेडी इसमें वेसो कंस्ट्रक्शन हुई है, कॉम्प्रोमाइज है ब्लड फ्लो, सो वी नॉट टेक टू द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट। अब जो वेसोप्रेसिन के एंटागोनिस्ट हैं वो हमारे पास क्या क्या, अगर we have conivaptan, ठीक है, इनकी हाई एफिनिटी है फॉर बोथ V1 एंड V2 रिसेप्टर्स, ठीक है। सिमिलरली टॉलवैप्टन है, इसकी 30 फोल्ड हायर एफिनिटी है फॉर V2 रिसेप्टर्स एंड फॉर V1 रिसेप्टर्स, ठीक है। इसका यूज का हम ये वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट कहाँ यूज कर रहे हैं, हाइपोनेट्रीमिया और हार्ट फेलियर के पेशेंट। फॉर एग्जांपल वी नो कि अब अगर वेसोप्रेसिन की एक्सेस बॉडी में हो गई है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड ये सॉरी वाटर रिटेन कर रहा है बॉडी में ज्यादा, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, and this excess water load is leading to heart failure, so we can give in that condition ये vasopressin की excess की वजह से हम अगर ये hyponatremia heart failure we can give the vasopressin antagonist, जिसमें से जो conivaptan है जो कि V1 रिसेप्टर जो वेसल्स पे हैं उस पे एक्ट करेगी, V2 जो है रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करेगी, जबकि टॉलवैप्टन जो है वो V2 के लिए इसकी एफिनिटी ज्यादा है जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स पे है, ठीक है। अच्छा साइड इफेक्ट्स पे आए तो टॉलवैप्टन के साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। सो आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू, दिस वाज ऑल अप हम टिल राइट नाउ हमने पिट्यूटरी हार्मोन्स पढ़े, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा तो इसमें क्या कर रहा था, मिल्क लाइक डाउन करा रहा था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है, सो वी कैन यूज फॉर द इंडक्शन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ठीक है। और हमने क्या करना है कि टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस होता है, प्लेसेंटल रेशियो हो सकता है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर ऑलरेडी फीटल डिस्ट्रेस में हो, ये प्लेसेंटल रेशियो केस हो, या ऑलरेडी कोई यूट्राइन सर्जरी एक्सटेंसिव हुई हुई हो, या मैल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, उसमें यूज नहीं करना। सिमिलरली कमिंग टू एंटीडायरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, उसमें क्या होता है कि हम जो ADH है बेसिकली एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या कर रहा था, इट इज सेल्फ एंटी डायरेटिक मीन एंटी डायोरेसिस, डायोरेसिस नहीं होने देगा, मतलब रीअब्जॉर्प्शन वाटर कराएगा, तो हम इसे कहाँ यूज करेंगे, डायबिटीज इंसिपिडिस में यूज करेंगे। सिमिलरली वेसोप्रेसिन है वो क्या कर रहा है, V1 रिसेप्टर्स के थ्रू वेसोस्पैक्टिक वेसोकंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इन द एसोफेजियल ब्लीडिंग, वी कैन यूज कोलोनिक डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेसोप्रेसिन को। सिमिलरली देन भी अगर फॉर एग्जांपल हमने वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट भी वो हमारे पास ड्रग्स हैं जो हम किन कंडीशंस में कर यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर एक्सेसिव वेसोप्रेसिन बॉडी में है और वो क्या कर रहा है, वाटर को रिटेन कर रहा है, जैसे हाइपोनेट्रीमिया हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में वी हैव कॉनिवैप्टिन या टॉलवैप्टिन व्हिच इज द वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, वी कैन यूज इट, ठीक है। आई होप you would have grasped all the concepts. Now I have these questions for you, that a 29-year-old woman in her 41st week of gestation had been in labor for past 12 hours. Although her uterine contractions had been strong and regular initially, they had diminished in force during the last hour. So which of the following agents will be preferred for treatment of this woman? You will answer me this question in your assignment. Obviously you are not in front of me to answer me right now. I have an assignment for you also, that you have to relate the receptors of vasopressin to its location and second messengers involved in intersection, and you have to write the advantages of octreotide over somatostatin and along with its clinical uses. So these are my learning resources. So I will end my lecture with a nice food for thought, that is, believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.
I will thank you all. And if you have any query, if you have any problem, you can contact, you can comment, and we will try our best to solve your all queries and help you out in every regard. Thank you. Good luck to all of you. Allah Hafiz.